Welcome to Hornbilltv. This is your anchor Kikris and your solo. First, the headlines. The all Manipur dealers of petrol pump AMDPP announced to shut down for 3 days starting Friday due to alleged financial crisis and donations demands by various organizations. The third meeting between union ministers and the farmers' leaders ended in stalemate. With no common ground in sight, the next round of talks will be placed on February 18th. The six-member BJP delegation constituted by the party national president JP Nadda to visit Sandesh Kali was stopped by the police in West Bengal on Friday. The number of fatalities in an explosion followed by a fire at a paint factory in the Alipura area of Outer Delhi has risen to 11, police said on Friday. And now for the news in details. Chhattisgarh police on Friday took out a procession of murder accused in Bilaspur. The procession, which started from Sarkanda police station, ended at court. The accused were produced to court today, February 16th. The murder incident, which took place a day earlier in Chhattisgarh's Sarkanda area, the police have arrested 5 persons in connection with the murder. The 5 accused were seen on live CCTV footages murdering one youth and beating to death of another youth. ये कल मध्य रात्रि सरकंडा थाना क्षेत्र के खमतराई अटल आवास के पास मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी पक्ष के द्वारा पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति एवं उसके साथी के ऊपर प्राणघातक हमला कर उनको जो है गंभीर रूप से घायल किया गया था, जिन्हें इलाज के लिए सिम्स अस्पताल भर्ती कराया गया था, जिसमें इलाज के दौरान एक की मृत्यु हो गई थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल था, जिसका इलाज अभी सिम्स अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना लगने पर तत्काल पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी करके घटना में सम्मिलित 5 पुरुष, जिसमें एक नाबालिग है और एक महिला को तत्काल घेराबंदी करके अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया है और आज इन्हें विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर कोर्ट पर पेश किया जा रहा है। थैंक यू। In response to rumors circulating regarding the alleged leak of high school leaving certificate HSLC examination question papers in Kachar district, Assam Education Minister Ranoj Pegu took the microblogging site X to dispel the misinformation. Addressing the concerns head-on, Minister Pegu stated that the reports of a question paper leak were entirely baseless and fabricated. He assured the public that the authorities are actively investigating the origins of these false claims and are prepared to take legal action against those responsible for spreading misinformation. Earlier in the day, the HSLC exam 2024 in Kachar was compromised as the English subject question paper was leaked within half an hour of the exam commencement. The leaked question paper quickly made rounds on social media platforms. The leaked question paper is suspected to have originated from the examination center of Baskandi Nina Mia HS School in Kachar, raising questions about the security protocols in place to safeguard the confidentiality of exam materials. Haider Hussain Majumdar, a teacher posted at the examination center, has been implicated in the alleged leak. The leak has reignited concerns about the efficacy of the State Education Board of Assam in safeguarding the sanctity of the examination process, especially in the light of previous instances of question paper leaks. The incident has once again put SEBA under scrutiny, raising questions about its ability to prevent such breaches and uphold the trust of students and stakeholders. The all Manipur dealers of petrol pump AMDPP announced to shut down for 3 days starting Friday due to alleged financial crisis and donations demands by various organizations. This was announced by the retail outlet representatives after an emergency meeting held on Thursday at Hotel Nirmala. Nearly 130 fuel outlets in the 5 valley districts have been shut down due to different reasons, including unbearable monetary demands by various organizations and CSOs, said a representative of the All Manipur Petroleum dealer. It warned that during the shutdown period, any untoward or unwanted pressure will result in further closures of the retail outlets.
An official of the Indian Oil Depot, Imphal, who wished not to be identified, said that many organizations have demanded at least 15 lakhs each from every fuel outlet, which is unreasonable given their profit margin. On February 10th, the representatives informed Chief Minister N. Biren Singh that they might be forced to close their retail outlets if the financial demands of donations exceed their capacity to pay. In the letter to the CM, representative of the retail outlets highlighted the challenges faced by them, including a decline in sales, a significant decrease in profit margins, almost 40 to 50%, and an excessive number of demands for donations from various organizations. It also stated that the fuel outlet are facing a decline in sales due to the present crisis, and our profit margins have decreased considerably by almost 40% to 50%, and the employees have been getting threats and some of them have been kidnapped for ransom. It also mentions that some of the retail outlets, petrol pumps, have been asked to close down if they are unable to meet their demands. We'll now take a short break. We'll be back with more news. ऊर्जा उत्पादन का यह नया इकोसिस्टम परिणाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू हुई सौर ऊर्जा नीति का। निजी आवास पर ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप संयंत्र लगवाने पर आकर्षक अनुदान की व्यवस्था है। 3 किलोवाट का संयंत्र लगवाने पर 1,95,000 का खर्च आता है, लेकिन केंद्र सरकार से 43,764 रुपए एवं राज्य सरकार से 30,000 रुपए का अनुदान प्राप्त होने से कुल लागत मात्र 1,21,236 रुपए ही रह जाती है। सोलर रूफटॉप संयंत्र से बिजली के बिल में भारी कमी का लाभ दशकों तक मिलता है। सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाती है। इसके लिए www.solarrooftop.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। रोशन प्रदेश, उत्तर प्रदेश। Nowadays, everyone is purchasing Amrit Sam. Why won't they buy? Quality, the best. Price, the best. Technical service, that too is the best. And on top of that, the strength of CSH gel. Even engineer Saab was talking about it. What is it? It is like Amrit for homes. See here, foundation, roof, lintel. CSH gel adds life to every dhalai. With Amrit Sem, your home becomes immortal. When the whole country is building with Amrit Sem, what are you waiting for, Janab? Amrit Sem powered by CSH gel. Har dhalai ki jaan. It only takes one prick of a needle to save lives. Get tested for HIV. Nowadays, everyone is purchasing Amrit Sam. Why won't they buy? Quality, the best. Price, the best. Technical service, that too is the best. And on top of that, the strength. Welcome back. The third meeting between union ministers and the farmer leaders ended in a stalemate with no common ground in sight. The next round of talks will take place on February 18th. After the meeting concluded, Union Minister Arjun Munda said that the third round of talks with the leaders of protesting farmers was, however, positive. Today, a very positive discussion happened between the government and the farmers' union, he said. Focusing on the topics highlighted by the farmers' union, we have decided that the next meeting will take place on Sunday at 6 p.m. We all will find a solution peacefully, he added. The farmers have put forth 12 demands before the central government for which they are marching to Delhi. This protest this time has been called by the Sangyukt Kisan Morcha and Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Committee, led by farmer union leaders Jagjit Singh Daliwal and Sarwan Singh Pandher. According to the protesting farmers, the centre promised them better crop prices, after which they ended the 2021 protest. They are demanding to enact a law guaranteeing a minimum support price (MSP) for all crops, as recommended by the Swaminathan Commission report.
सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल। और मैं इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक। In an interim relief to the Congress party on Friday, the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) allowed it to operate its frozen bank accounts with the lien of Income Tax Department. Rajya Sabha MP and Advocate Vivek Tanka, who appeared for the Congress before the ITAT bench in Delhi, thanked the bench for a gracious hearing. He said that the ITAT said there is no restriction on bank accounts but only a lien. A lien is a form of security interest granted over an item of property to secure the payment of a debt or performance of some other obligations. In a video shared on X, Tanka shared details of arguments he placed before the bench during the hearing. All bank accounts of Congress party of the AICC have been frozen, which means in the coming festival of elections, one of the largest stakeholders will not be able to participate. We will not be able to take up any expenditure whatsoever, whether it is the movement of vehicles, people, yatra or anything all connected with these elections. The court heard me for some time, Tanka said. Appeared for the Indian National Congress before the ITAT bench, Delhi, and it was court number 1, where I said that all bank accounts of Congress party of the AICC have been frozen, which means in the coming festival of elections, one of the largest stakeholders will not be able to participate. We will not be able to take up any expenditure whatsoever, whether it is movement of vehicles, people, yatras, anything at all connected with these elections. The court heard me for some time. I said we have very good case on facts. We had filed a return on time. It is being misconstrued, and only for that reason we can't be punished disproportionately. Number 2, our revenues for that particular year was 198 crores, and we spent admissible expenditure that was incurred was 197 crores, and how a taxation of 130 or 150 odd crores has been made on us, with interest coming to 135 crores. I said it is all I would like to argue on merits. But today, protect the party, protect democracy, and allow us to operate a bank account. Very graciously, the ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account. There is no restriction on the bank account. You can operate, and then they will hear me on the merits of the case on the interim application that I filed on Wednesday. I am grateful to the Income Tax Appellate Tribunal for this gracious hearing. And number 2, as I said before the tribunal, I am repeating again, Justice Kapadia, Chief Justice of India, would always say that the first opportunity of an SSC of an independent hearing only comes when he goes before ITAT, and today that we had.
The Manipur government has suspended as many as 7 IRB personnel in connection with looting of arms and ammunitions from 5th IRB Battalion headquarters, Chingaral, Imphal West. The incident happened on 13 February. Commandant of 5th IRB Chingaral, Imphal East, H. Balram Singh, in an order said that the 7 personnel of the 5th IRB, namely K. Binoy Singh, K. H. Khaba, Liang Mai, N. G. Sanatomba Singh, M. Binod Kumar, D. Ishak, RFM MD, Jabbar Khan and Manoj Kumar Bhattarai have been suspended with immediate effect and until further order. The same is carried out for Rule 66 of Assam Police Manual Part 3, it said. It also stated that a disciplinary proceeding is being contemplated against them for their grave negligence and their relegation of duties in connection with the incident. The order further stated that during the period of suspension, their headquarters will be 5th IRB HQ Chingaral and they will not leave their headquarters without obtaining the prior permission of Commandant. They will be entitled subsistence allowance as admissible under the rules during the period of their suspension, it mentioned. Asung DC office ki bulu aite boda gari ang se tao kom tao We'll now take a short break. We'll be back with more news. फरवरी 2018 डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की शुरुआत। फिर हुई निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की शुरुआत। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों से यूपी बना ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पसंद। अब उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को कर रहा मजबूत। देश में पहली बार 10 लाख करोड़ से अधिक की 14,000 से अधिक निवेश परियोजनाओं की एक मंच से होने जा रही है शुरुआत। खुलेंगे 34 लाख से अधिक रोजगार के द्वार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ 19 फरवरी को लखनऊ में ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। Welcome back. The 6-member BJP delegation constituted by the party National President JP Nadda to visit Sandesh Kali was stopped by the police in West Bengal on Friday. The 6-member team includes party leaders Annapurna Devi, Pratima Bhomik, Sunita Duggal, Kavita Patidar, Sangeeta Yadav and Brijlal. BJP leaders Agni Mitra Paul is accompanying the delegation to Sandesh Kali. As the delegation was blocked by the police, they raised objections to the police conduct, claiming that the police had no right to stop them. We feel like the local police are also involved in atrocities against these women. Let us go. We want to go. The police are stopping us. They have no right, they said. The 6-member team has come and their sole purpose is to meet the affected families, especially the women and daughters. We want to meet them and assure them, a member of the delegation said.
वापस जा रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग ऑनरेबल गवर्नर साहब के साथ मिलेंगे और उनको सारी यहाँ की जो कुछ भी घटना हुई है उसके बारे में उनको जो है वो बताएंगे और इसके साथ साथ जैसे जो महिलाओं के साथ हमारी वीडियो कॉल हुई है उसके बारे में भी उनको बताएंगे और अपनी पूरी रिपोर्ट हम माननीय गवर्नर साहब को भी देंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी देंगे। बस यहाँ से तुरंत जाकर मिलेंगे। तो आप लोगों से सर की बात हो गई है अपॉइंटमेंट के लिए? अभी जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल गवर्नर साहब से हम लोग अपॉइंटमेंट लेके और उसके बाद जल्द मिलकर उनको अपनी बात जो है उनके सामने रखेंगे। क्या ये दिल्ली में भी पार्लियामेंट एथिक्स कमेटी में एथिक्स कमेटी को भी अपनी रिपोर्ट देंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को अपनी पूरी रिपोर्ट देंगे। राष्ट्रपति जी को भी बताएंगे क्योंकि वो भी एक महिला है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जिस तरह से जो है एक महिला मुख्यमंत्री होकर यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, ध्वस्त हो चुकी है और महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला मुख्यमंत्री, महिला सांसद, महिला पुलिस, लेकिन फिर भी अगर वो वहाँ पर उनसे मिलने देने के लिए नहीं जाने देना चाहती है तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर सरकार जो है वो गुंडा राज उसका चल रहा है। कहा जा रहा है कि जिन लोगों से आप लोगों ने वीडियो कॉल में बात किया पुलिस उन पर लाठीचार्ज, ये भी सुनने में आया है, बिल्कुल सुनने में आया है ये और इसकी बात भी एक एक बात की रिपोर्ट जो है माननीय महामहिम को हम देंगे। क्या खबर आई है जिनसे बात की है? हमें किसी की तरफ से ये पता लगा है कि जो महिलाएं अपनी बात को रख रही थी हम लोगों के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू और उसमें जो है उन्हीं महिलाओं को पुलिस जो है वहाँ पर अब मारपिटाई उनके साथ कर रही है। सुनीता दुग्गल, सांसद हरियाणा। आवाज है जो आम लोगों की दल आज संदेश खाली जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी ने कल विधानसभा में खड़ा होकर कहा कि आरएसएस और बीजेपी जिस तरह से ये घिनौना अंजाम को ज्यादा और बढ़ देखिए वो महामाटी मानुष की बात बोला है। जो महिला एक मुख्यमंत्री है, महिला का वो ममता है उसका नाम है, उसका अंदर ममता का कोई चीज नहीं है। एक महिला बैठा हुआ है दूसरा महिला का इज्जत लूटता है, उसका झूठा महिला दुनिया में कोई नहीं हो सकते। आरएसएस और बीजेपी शासन उसके पास है, शासन उसके पास है। शेख शाहजहां कौन है? उसके आंचल के नीचे हजारों शेख शाहजहां को लालन पालन उन्होंने कर रहे हैं। कल पार्लियामेंट उन्हें संसद में उनका विधानसभा में खड़ा होके शेख शाहजहां को जो महिला सेफगार्ड दे सकते हैं उससे दुष्ट महिला हो नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से आप लोग 144 है, आप लोग जा रहे हैं 144 में डेमोक्रेटिक राइट है, हमको जाना है। हम एक महिला है, हम जा सकते हैं 144 में 4 लोगों को मिलकर जा सकते हैं। हम चाहेंगे वेस्ट बंगाल का पुलिस जो डेमोक्रेसी है उसको दिखाए। That was on the chaos on Sunday. Shkali, heading on to the next news. The number of fatalities in an explosion followed by a fire at a paint factory in Alipura area of Outer Delhi has risen to 11, police said on Friday. As reported by news agencies, 4 additional bodies were discovered at this site, bringing the death toll. The incident, which occurred on Thursday evening, also resulted in injuries to 4 individuals who were currently receiving medical treatment at a hospital. The charred bodies of the 11 victims were recovered from the factory, which also houses chemical godowns located in Alipur's Dayal market, a Delhi Fire Service official said. The fire was preceded by the blast, and as soon as it spread to nearby buildings, including a drug rehabilitation center and 8 shops. Meanwhile, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal visited the site and expressed his sorrow over the incident and said that the government will provide rupees 10 lakh each to the families of the deceased, rupees 2 lakh each to the people with major injuries, and rupees 20,000 each to the people with minor injuries. He also said that an inquiry will be initiated following reports of fire tenders being laid to the coal, and action will be taken against the factory owner for running the factory in a residential area. कल यहाँ पे शाम को रात को जो आग लगी है ये बड़े दुख की बात है। बता रहे हैं कि पेंट की फैक्ट्री थी और हम जानते हैं कि पेंट कितना ज्वलनशील पदार्थ होता है और वहाँ पे उसमें आग से जो सारा इसका केमिकल था वो बता रहे हैं नालियों में बहने लग गया और नालियों में भी आसपास के इलाके में सारे में आग लग गई। आसपास की दुकानें, आसपास के घर, कईयों में आग लग गई। इसमें 11 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है हर एक के परिवार को हम लोगों की संवेदना है और हर एक के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। किसी की भी मौत की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अपनी तरफ से हम जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे। जो घायल हुए हैं माइनर इंजरी, 2 की माइनर इंजरी थी उनको 20-20 हज़ार रुपये और जो 2 की मेजर इंजरी थी उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो मकान और घर जल गए हैं
उनकी सरकार की पॉलिसी है उसका सारा आकलन कराएंगे। मैंने अभी डीएम को बोल दिया, और जो नुकसान हुआ है वो सरकार की पॉलिसी के हिसाब से उनका भी नुकसान की भरपाई की जाएगी। 2 मुद्दे और निकल के आ रहे हैं। एक ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो फायर ब्रिगेड थी वो लेट आई थी। इसके मैं जांच के आदेश दूंगा। और जो भी इसके लिए दोषी है उन दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं किसी भी हालत में। दूसरा, ये फैक्ट्री यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में कैसे चल रही थी, इसके भी जांच किया जाएगा कि रेजिडेंशियल एरिया में इतनी कंबस्टिबल कार्रवाई भी होगी। अभी आज ही ऑर्डर देंगे, जल्दी कार्रवाई होगी। That's all for the Prime Time Bulletin. This is your anchor signing off.